चलो डेट डालो 24 दिसंबर। डेट डालो 24 दिसंबर। टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन। So a cone, the right circular cone has a circular base. It's a circular base. If you look at it from the bottom, you will see the full circle. So it will have a radius, let's say r. It also has a height, let's say h, and it also has a slant height, let's call it L. So we have seen the total surface area is base area plus curved surface area. Base area का value pi r square, curved surface area pi rl. If you take pi r common, you will get rl plus r or r plus l. Similarly, volume is 1 by 3 pi r square h. हम लोग पहले कर चुके हैं, सब लोग के पास है ये। आ जाओ सवाल शुरू करते हैं। The diameter of a cone is 14 centimeter. The diameter of a cone is 14 centimeter and its slant height is 9 centimeter. Find the area of its curved surface. The curved surface area is simply pi r l. Pi 22 by 7, r दिया हुआ है 7 और l दिया हुआ है 9. So you should get 198 centimeter square. Simple application of formula है. एक और लिखो. Find the total surface area of a cone. Find the total surface area of a cone if its slant height is 9 meter. If its slant height is 9 meter and the radius of its base is 12 meter. And the radius of its base is 12 meter. इस बार टोटल सरफेस एरिया बोला है तो क्या लगा देंगे? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. इफ यू विश पाई आर आर प्लस एल. पाई 22/7, आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, अंदर 12 प्लस एल का वैल्यू 9. So that should give 21, that should give 3. So 22 multiplied by 12 multiplied by 3, 36, 72, 297, 729 आता क्या? 729 सेंटीमीटर 7.
Next, the radius of a cone is 3 centimeter. The radius of a cone is 3 centimeter. And its vertical height is 4 centimeter. And its vertical height is 4 centimeter. Find the area of the curved surface. 3 centimeter. Sorry, height 4 centimeter, radius 3 centimeter. हमें बोला है क्या निकालने के लिए बोला जी? कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल. दैट मींस वी हैव टू फर्स्ट फाइंड एल. कैसे निकालेंगे एल? By using the fact, utilizing the fact that it's a right circular cone. If it's a right circular cone, that means the height and the radius make an angle of 90 degree with each other, with the base as the slant height. So we have 3 square, slant height is L. So L square should be equal to 3 square plus 4 square using Pythagoras theorem. ये 4 है, ये 3 है, एक right angle बन रहा है, हमें ये L निकालना है. If you do the calculation, you should get L equal to 5 centimeter. Once you get that, put it here. So this is 22/7 किसी काम का नहीं है. So 3.14 into 3 into 5. आया? कितना आया? 47.14 centimeter square. Next, the radius and slant height of a cone. The radius and slant height of a cone are in the ratio 4:7. Are in the ratio 4:7. If its curved surface area is 792 centimeter square, if its curved surface area is 792 centimeter square, find its radius. Find its radius. बोलो रेडियस एंड स्लैंट हाइट 4:7. तो रेडियस ले लेंगे 4x, तो स्लैंट हाइट हो जाएगा 7x. हमें बोला है कर्व सरफेस एरिया 792 है. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल इज इक्वल टू 792. तो पाई आर एल हमें निकालना क्या थी? क्या हो रहा है आज? 792 और 729 का कुछ तो चक्कर है. हमें निकालना क्या है? रेडियस. तो let's pull the values first. So pi r 4x into L 7x should be equal to 792 by pi. So we have 28x square is equal to 792. Something wrong? मैं बोल भी 792 लिख भी not. Something very wrong. ठीक. What do you get? x equal to, ये कट जाएगा 4 से. ये कितने से कटता है जी? 22 11. ये 22 तो 20 से कट जाएगा. 3 66 39 6 4 9 आता है.
So x is equal to under root of 9, that is x equal to 3. So radius will be 12 centimeter. कर पाए सब लोग? The circumference of the base of a 10-meter high conical tent, the circumference of the base of a 10-meter high conical tent is 44 meters. Is 44 meters. Calculate the length of canvas used in making the tent if the width of the canvas is 2 meter. चल एक काम करो, सेम क्वेश्चन लिखते हैं एक और वैल्यू के साथ एंड देन विल सी हाउ यू डिड इट. Same question with different values. How many meters of cloth? How many meters of cloth? 5 meter wide. How many meters of cloth? 5 meter wide will be required to make a conical tent. How many meters of cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 7 meter, the radius of whose base is 7 meter and whose height is 24 meter, and whose height is 24 meter. Now what is this thing with length of cloth? सुनना ध्यान से, सुन लो, इसको करना. If you have ever gone to buy some cloth for or material for your dresses, you will find जो कपड़ा बिकता है, कपड़ा, not the ready-made shirts or pants. जो normal cloth अगर लेने जाओगे तो वो इस तरह का कपड़ा रहता है. Have you seen? It's folded in a stick or something, and then this is how it looks. इसका जो width होता है वो कुछ particular width fixed होता है, right? जैसे इस particular केस में कितना दिया हुआ है? 5 मीटर, राइट. हमें पूछा है बताओ ऐसा अगर कपड़ा मिल रहा है तो कितना लंबा कपड़ा लूं, ये एल कितना बड़ा हो ताकि इससे एक टेंट बन जाए, जिस टेंट के बारे में कुछ तो दिया होगा कि रेडियस इज 7 मीटर. इससे हमें एक टेंट बनाना है जिसका रेडियस हो 7 मीटर और जिसका हाइट हो 24 मीटर. हाइट दिया हुआ है 24 मीटर. ऑब्वियसली वी विल अज्यूम दैट देयर इज नो वेस्टेज, राइट. यहाँ से यहाँ जाने में देयर इज नो वेस्टेज. कभी कभी वेस्टेज भी दिया रहेगा एज अ परसेंटेज, दैट बिकम्स लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. बट फॉर नाउ लेट्स से इस कपड़े से ये बनाना है, तो इन दोनों का क्या सेम होना चाहिए? इन दोनों का क्या सेम होना चाहिए? इसका कर्व सरफेस एरिया शुड बी इक्वल टू इसका एरिया. इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, उसको इसके एरिया से इक्वेट कर दो. इसका एरिया विल बी लेंथ इंटू 5, सो रेक्टेंगल, तो इट विल बी L इंटू 5. या मैं इसको x लेता हूँ, सो 5x शुड बी इक्वल टू इसका एरिया पाई आर L. So you find out L first, the slant height, put the value of radius and then find out x. पिछले बार भी यही करना था, पिछले क्वेश्चन में भी. ओनली प्रॉब्लम वाज कि जो स्लैंट हाइट है वो शायद स्क्वायर रूट परफेक्ट करनी है. 149 का स्क्वायर रूट आ रहा होगा. चलो ये वाला बनाओ. कितना आया? 110 मीटर. पहले स्लैंट हाइट कितना आया? स्लैंट हाइट इज 25 मीटर होगा स्लैंट हाइट, और फिर उसको अगर इक्वेट करोगे इससे यू शुड गेट 110 मीटर्स. ठीक है, ऐसा सबका. कभी कभी इसका प्राइस दे देगा, जैसे मान लो बोल देता कि इस क्लॉथ का रेट है 3 रुपीज पर मीटर. लेट्स से इस क्लॉथ का पैसा, इसका रेट देता 3 रुपीज पर मीटर, तो हमें क्या करना पड़ता? 3 रुपीज पर मीटर मतलब 1 मीटर का 3 रुपया.
तो 110 मीटर का 3 रुपीज पर मीटर का मतलब 1 मीटर का 3 रुपया, तो 110 मीटर का 110 इंटू 3 कर लेते। आ जाओ। A tent is of the shape of a right circular cylinder कभी मेरा भी बात मान ले। A tent is of the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meters and then becomes a right circular cone with a maximum height of 13.5 meters above the ground, and then becomes a right circular cone with a maximum height of 13.5 meters above the ground. Calculate the cost of painting the outer side of the tent. Calculate the cost of painting at the rate of calculate the cost of painting the inner side. Outer side लिखो, outer side. Calculate the cost of painting the outer side of the tent at the rate of rupees 2 per square meter. At the rate of rupees 2 per square meter. Consider the base of the tent has a radius of 14 meters. Consider that the base of the tent has a radius of 14 meters, 1/4. That's how your tent should look. It has a cylinder with a height of 3 meters. So यहाँ से यहाँ तक हमें बोला है 3 मीटर. A radius of base 14 meters. So this is 14 meters. और टोटल हाइट हमें क्या है 13.5. अगर टोटल हाइट 13.5 है मतलब यहाँ से ग्राउंड से यहाँ तक 13.5 है, तो फिर कोन का हाइट कितना हो जाएगा? कोन का हाइट विल बी 10.5 मीटर. सो दिस इज व्हाट यू हैव. ठीक है. अब हमें इसके लिए कपड़ा लेना है, तो कपड़ा लेना तो क्या निकालना पड़ेगा? कपड़ा लेना तो क्या निकालना पड़ेगा? कहाँ कहाँ कपड़ा लगेगा? क्या कोन के सुन लो पहले, क्या कोन के कर्व सरफेस पे लगेगा? बिल्कुल हाँ, लगना ही चाहिए. क्या कोन के बेस पे लगेगा? वो तो टेंट के अंदर है. क्या सिलेंडर के बेस पे लगेगा? वो भी कोन के अंदर है. क्या इस सिलेंडर के नीचे वाले बेस पे लगेगा? वो भी नहीं लगेगा. सो ओनली थिंग दैट वी नीड दैट नीड्स क्लॉथ इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ. सो एरिया ऑफ क्लॉथ required is equal to area curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder. Curved surface area of cone is pi RL. Curved surface area of cylinder is 2 pi RH. अब ध्यान से देखो इधर, क्या ये R और ये R सेम है? तभी वेरिएबल सेम रखेंगे, वरना अलग रखना पड़ेगा. क्या इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम होगा? बिल्कुल होगा, एक के ऊपर एक है. तो दोनों का रेडियस. Then you can calculate based on the values. Let's put those values.
अच्छा हमें एल निकालना पड़ेगा। सो ये 3, एल विल बी इक्वल टू, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10.5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फाइंड आउट एल। 17.5, 17.5। 17.5। हाँ ये मैं बोलूँ 17.5 कैसे हो सकता है। ठीक, सो दैट कैन बी 17.5। तो वी गेट, यहाँ से पाई आर कॉमन निकाल ले तो अंदर बच जाएगा एल प्लस 2h। वी कैन पुट द वैल्यू। सो पाई इज 22/7, आर का वैल्यू 14, एल का वैल्यू 17.5 प्लस 2 टाइम्स h इज, h लिया था हमने इसका हाइट, सो 2 into 3। So we get 22 multiplied by 2 multiplied by, ये हो जाएगा 17.5 plus 6, 23.5। आता है क्या? ये हो जाएगा 47 to 94, हो जाएगा 1034। आता है क्या? चेक करो जरा। 1034 मीटर स्क्वायर, right? So this is the area. Now the price given is 2 rupees for 1 square meter. So cost is 1 meter square has a cost of 1 meter square has a cost of 2 rupees. Therefore 1034 meter square will cost 2 multiplied by 1034, that is 2068 rupees। आया क्या? 2068 रुपीज। सब लोग कर पा रहे हो कि छोड़ दो चैप्टर? जैसा बोलो। कर पाए? बड़े आगे क्यों? हाय रे, अभी तक वहीं पट गए हो। ऐसा मत करो, क्वेश्चन पढ़ो। सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर। 3 मीटर, तो सिलेंडर का हाइट हो गया 3 मीटर। और पूरे टेंट का हाइट कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन ही गलत लिखोगे तो कहां से होगा? वो 13.5 है। अब बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो मुंह खोला करो ना, पहले ही बताया करो। इफ यू आर कंफ्यूज एट सच अ प्रिलिमिनरी स्टेज, यहाँ पे डेटा ही गलत आ रहा है। चलो जी, इसके पहले का बना था कि पहले भी ऐसे अटके हुए थे? पक्का बना, अब बन जाएगा ये। चलो, और किसी को कहे, देखो प्लीज चुपचाप मत रहो। हाँ, अगर गलत लग रहा है कुछ तो बोल, मे बी डेटा कॉपी करने में गड़बड़ की हो, या कंसेप्चुअल कहीं गड़बड़ है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नॉट स्पीकिंग अप? बड़े आगे। चलो नेक्स्ट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। फाइंड द, बाय द वे सरफेस एरिया का प्रॉब्लम इतना ही था। सो सरफेस एरिया रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, दैट बिकम्स योर होमवर्क। घर में बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है सारा दिन, और एक चैप्टर में 10 सवाल बनाने बोले। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट, रुक मैं आता हूँ, मेरा खत्म नहीं हुआ अभी तक, भड़ास निकालना मुझे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन 1.02 मीटर हाई। Find the volume of a right circular cone 1.02 meter high if the radius of its base is 28 centimeter. If the radius of its base is 28 centimeter. बोलो, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है। वॉल्यूम पूछा है, हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 पाई के बदले 22/7। आर कितना दिया हुआ जी?
21, 28 का स्क्वायर और h 1.02 मीटर, तो पहले सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 102 कर लेंगे। To do that calculation properly, you should get 83776 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता तुम्हें? कैसे लोग, और उसमें से एक 11 का मल्टीप्लीकेशन और लाइफ आसान नहीं। ये भी करूं मैं, ये 3 से कट जाएगा और क्या चाहिए यार। ये 34 हो गया, ये 7 एक 28 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 28 बच जाएगा। मतलब 22, 34, 28 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। एंड यू आर सेइंग इन क्लास 9th यू आर हैविंग ट्रबल विद दैट। दैट इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर क्लास 9th स्टेटस। डिमोट कर दो क्या मेरे क्लास में? यू नो तुम लोग 9th you were taught this when you were in this class। बंद करो यार, 3 में नहीं पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन? कितने लोग ला पाए थे 83776? 3 जन, 4 जन, 5 जन, बाकी लोग? मैं बढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, आज ही टेस्ट कर दूंगा। फटाफट लेके आओ, चलो मल्टीप्लाई करो, मेरी मर्जी। टेक दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज गोल्डन पीरियड टू रन लर्न एज वेल एज प्रैक्टिस। एक राउंड काम हो जा रहा है, घर पे आके एक राउंड बनाओगे, रिवीजन हो गया, काम खत्म हो गया, टेस्ट के लिए तैयार। बड़े हैं क्या जी? बढ़िया, आगे चलो नेक्स्ट। The area of the base of a right circular cone, the area of the base of the a right circular cone is 314 centimeter square. Is 314 centimeter square, and its height is 15 centimeter. And its height is 15 centimeter. 15 centimeter. Find the volume of the cone. Find the volume of the cone. पाई का वैल्यू क्या यूज करोगे? हाँ, पाई का वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं है, वो एरिया बेस दिया हुआ है। अरे हमेशा क्वेश्चन हो तो जवाब देना ही पड़े, ऐसा जरूरी नहीं। समटाइम्स नो आंसर इज अ गुड आंसर। 314 क्या है जी? एरिया बेस मतलब इस फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, दिस इज गिवन, दिस इज 314, यू डोंट हैव टू फाइंड आर। और एच का वैल्यू 1515। बस कर लो, 7 8 3 5। 1570 आया सेंटीमीटर क्यूब। सब लोग कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे तुम, आया जी पक्का? The diameter of a right circular cone, the diameter of a right circular cone
is 8 centimeter. The diameter of a right circular cone is 8 centimeter, and its volume is 48 pi centimeter cube. 48 pi centimeter cube volume. What is its height? बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. क्या निकालना है? हाइट. H will be equal to 3v by pi r square. Can you see that? 3v pi r square h. सब्जेक्ट बना लिया. अब डाल दो सारे वैल्यूज. 3 इंटू v कितना दिया था? 48 पाई. तो पाई से मल्टीप्लाई मत कर देना, देखो तो कट जाएगा. बाई पाई. और r का वैल्यू हाँ डायमीटर 8 सेंटीमीटर था. लो जो भी आंसर आता है. हाँ ना. पाई पाई कट जाएगा. 16 3 3 9 9 आता है क्या? 9 सेंटीमीटर. लो कर लो यार तुम. ऐसा तुम्हें लगता है? द वॉल्यूम ऑफ अ कोन. नहीं. अच्छा कर लो. द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 18480 centimeter cube. The volume of a cone is 18480 centimeter cube. If the height of the cone is 40 centimeter, if the height of the cone is 40 centimeter, find the radius of its base. हो गया. बोलो. वॉल्यूम दिया है 18480. तो V is 18480 और हाइट दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. हमें बोला है रेडियस निकालने के लिए. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. हमें h दिया हुआ है तो आर स्क्वायर निकाल लेंगे. आर स्क्वायर निकालने के लिए 3v बाई कितना हो जाएगा जी? पाई h. Right. So r will be equal to under root of this. So we need to find out square root of 3 times 18480 by pi 22/7 into h. But if you want to break it up and do step by step, feel free. I generally prefer to do the calculation at last at one go. If you do the calculation, you should get 21. आता है क्या? R is equal to 21 centimeter. किसी का भी अगर नहीं आता तो बताओ, so that we can check whether you have got it wrong. है जी मिस्टर अजहर.
Next, the base radii of two circular cones. The base radii of two circular cones are in the ratio 3:5. Are in the ratio 3:5. If the ratio of their heights, if the ratio of their heights is 4:7, if the ratio of their heights is 4:7, then find the ratio of their volumes. Then find the ratio of their volumes. So how many cones? Cone 1 and cone 2. बोलो कोन 1 का रेडियस मान लेते हैं R1, कोन 1 का हाइट मान लेते हैं H1, कोन 2 का रेडियस R2, हाइट H2, वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2. बोलो रेडियस का रेशियो 3:5. तो अगर ये 3x है तो ये 5x होगा. हाइट इज इन द रेशियो ऑफ हाइट 4:7. तो अगर ये 4x है तो ये 4y. क्यों ऐसा होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट. सेम रेशियो क्यों नहीं होगा. वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1. इस केस में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2. सो हमें पूछा है V1/V2 का रेशियो. सो V1/V2 विल बी इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बाई 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2. 1/3 पाई कट जाएगा तो V1/V2 विल बी इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2. Now you put the ratios. R1 का वैल्यू 3x, R2 is 5x, इसका स्क्वायर, H1 is 4y and H2 is 7y. तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/25. ये हो जाएगा x कट जाएगा और ये हो जाएगा 4/7. तो 36/175. 36:175. अब तक तो ये करना चाहिए. हम लोग क्यूब के जमाने से तो कर रहे हैं. क्यूब का भी सेम तरह से किया था, क्यूबॉइड का भी, फिर सिलेंडर का भी. नेक्स्ट, a conical vessel, a conical vessel whose internal radius is 5 centimeter, a conical vessel whose internal radius is 5 centimeter and height 24 centimeter and height 24 centimeter is full of water, is full of water. This water is emptied, this water is emptied into a cylindrical vessel. This water is emptied into a cylindrical vessel with internal radius 10 centimeters. With internal radius 10 centimeters. Find the height
to which find the height to which the water rises in the cylinder. Find the height to which the water rises in the cylinder. बोलो, कोन का डायमेंशन, रेडियस, कोन के लिए रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 34 सेंटीमीटर। और जिस सिलेंडर में उसको डाला जा रहा है उस सिलेंडर का रेडियस, तो दूसरा आर लेते हैं 10 सेंटीमीटर। हमें हाइट निकालना है, कितने हाइट तक पानी भरा। अब सुनना ध्यान से कैसे करेंगे इसको करने का, इसको सोचने का तरीका। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द आंसर, बट यू शुड आल्सो थिंक व्हाई इट इज वर्किंग। ये कोन है, क्योंकि पानी अंदर ही है तो हमें सिर्फ इंटरनल डायमीटर और हाइट से ही मतलब है, वही दिया हुआ है। सो द कोन माइट लुक लाइक दिस, वी आर नॉट वरीड, राइट। हमें इंटरनल रेडियस और हाइट की जरूरत है, वो हमें दिया हुआ है। सो लेट मी गेट रिड ऑफ दिस। ये पानी उठा के एक और सिलेंडर में डाला गया जिसका कुछ और रेडियस है। हमें बोला गया कि बताओ जब इसको इसमें डाला जाएगा तो इसमें कितना पानी का हाइट आ जाएगा, राइट। हाउ मच, बाय हाउ मच विल द वाटर राइज इन द सिलेंडर, दिस इज द क्वेश्चन। इस पानी और इस पानी में क्या सेम, वॉल्यूम, राइट। एक्चुअली मास सेम होता है, बट ठीक है, क्योंकि मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग एंड मास इज कांस्टेंट, देयरफॉर वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो इसका वॉल्यूम, इस पानी का वॉल्यूम और इस पानी का वॉल्यूम सेम है, राइट। ये इस पानी का शेप क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। हम लोग वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। वी आर यूजिंग दैट थिंग कि द लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे जो पानी है उसका शेप है कोन, राइट। तो कोन का वॉल्यूम, क्योंकि कोन के शेप में, तो कोन का, पानी का वॉल्यूम विल बी कोन का वॉल्यूम, राइट। पानी कोन के शेप में, तो पानी का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू कोन का वॉल्यूम। और यहां पे जब पानी डाल दिया तो वही पानी किस शेप का हो गया, सिलेंडर का हो गया, राइट। तो कोन का वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बट सिलेंडर का पूरा हाइट कि सिर्फ पानी का हाइट, पानी का हाइट, सिलेंडर का हाइट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां पे पानी था, वो जो पानी यहां पे था वही पानी यहां पे। सो वी गेट वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जहां पे मैं लिख रहा हूं, दिस इज सिलिंड्रिकल प्लेस जहां पे पानी है। सिमिलरली कोन का वो वाला वॉल्यूम जहां पे पानी है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच हमने छोटा छोटा लिया है, और वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू एच। Generally, I prefer to take this as x so that you are not confused with the height of the cylinder. मान लो अगर इस सवाल में हाइट ऑफ द सिलेंडर भी दिया होता, हमें उसकी जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू कैलकुलेट दिस, राइट। क्योंकि हमारा जो सिलेंडर बना है, पानी का सिलेंडर जो है, राइट, हमें इस सिलेंडर से मतलब नहीं, जो पानी का सिलेंडर बना है उसका हाइट ये x, और यहाँ का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है, ना कि इसका वॉल्यूम इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। तो नाउ वी कैन यूज दिस। सो पाई पाई कट जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर एच बाई 3 आर स्क्वायर। पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर इधर चला गया, और आर का कुछ रेशियो एक अच्छा सा, हाँ है ना, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो वी कैन यूज आर बाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच बाई 3, राइट। यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो मैंने दोनों को अंदर ले लिया और स्क्वायर कॉमन लगा दिया, बिकॉज द रेशियो इज नाइस, राइट। 5/10, तो ये हो जाएगा 1/2, 5/10 इज 1/2, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज 24/3, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। सो x इज इक्वल टू 2 सेंटी, यानी कि जो पानी का हाइट आएगा वो 2 सेंटीमीटर का हो सकता है। ये जो सिलेंडर है वो 50 सेंटीमीटर का, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने फॉरगेट दिस पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, बट इट सो हैपेंस कि इस पानी ने पूरा का पूरा कोन ऑक्यूपाई किया हुआ है, राइट।
इसलिए इस कोन का पूरा वॉल्यूम होगा, जबकि सिलेंडर का इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ, इतना ही जगह ऑक्यूपाई किया हुआ, तो सिलेंडर का ये वाला वॉल्यूम होगा। क्लियर है? पक्का? दिस इज गोइंग टू कम इन अ बिग वे इन क्लास 10th। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू गेट दिस इन क्लास 9, बट 10th में आएगा जरूर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक और ऐसा दूं क्या? दूं? अच्छा, चलो एक दूसरा देता हूँ। नहीं, यही देता हूँ। अ सॉलिड क्यूब, ना ना, मतलब द रेडियस and height of a cone are in the ratio, the radius and height of a cone are in the ratio 3:4. If its volume is 301.44, if its volume is 301.44 centimeter cube, what is its slant height? What is its slant height? Take pi is equal to 3.14. Take pi is equal to 3.14. I'm not going to solve this problem. I'm going to give you a deal. The deal is you solve it, you go home.